So welcome everyone. I hope we were able to spend some time in gathering our consciousness with the mantra, and happy Darshan Day to everyone. Happy 24th April. And today we have also another thing which we thought we'll maybe explore a little bit. So the poet Ramdhari Singh Dinkar, he's written many beautiful poems in Hindi, and maybe towards the end we will spend some time to explore. Those of us who are interested, they can still. So today is the final arrival of mother in Pondicherry, 24th April 1920. And there is a significance to it, which mother also has shared. So I thought maybe we'll just go through a few lines through Mother Sri Aurobindo only. And just there is a little text which here in Sri Aurobindo Ashram, Delhi, they're going to read out Monica, today. Yes, sorry, yes. I have a lot of echo from your side. Echo. Okay. Yeah. Okay. Is it a problem with everyone, the echo thing, or is it only at Shadaji's end? No, not. No, it's clear. It's clear for me. Okay. Good afternoon. Okay. No echo. Okay. Sorry. Okay. So yeah, maybe Shardaji, you can do something with your voice there. Yeah, so there is a text which here in Sri Aurobindo Ashram, Delhi, it will be read out in the program today. So I thought we'll just go through those words and maybe try to understand the significance of this day today, 24th April. So, yeah, so it would be nice if all of us who are present today, they can take part in the reading. And not just one person reads, but maybe some of us like share a bit of it here and there. Yeah, so would anyone like to start with these lines from Savitri or the mother? Yeah. I'll read. Okay, Sujata ji. So you can read this much from Savitri. At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow round, the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire. Thank you. I thought maybe Sujata ji's voice has changed. I closed my eyes and yeah, anyway. I can read the next one when you tell. Yeah. Yes. So this is for our mother. Mother is the golden key. She is the golden bridge. And as we share again and again that we don't have to do too much effort, don't have to toil much. We have to just keep offering ourselves, each part of our life, to the mother, and she does the yoga for us.
because हमारे बस की बात नहीं है. So she is the golden bridge, the wonderful fire. Alone her hands can change time's dragon base. Yeah, so Sujata ji, you can read Sure. this. The mother's final arrival at Pondicherry, April 24th. Sri Aurobindo was living in Pondicherry with 4 or 5 disciples from 1910 to 1920. In 1914, the mother came from France. In one of her reminiscences, the mother wrote, "Between 11 and 13, a series of psychic and spiritual experiences revealed to me not only the existence of God, but man's possibility of uniting with Him, of realizing Him integrally in consciousness and action, of manifesting Him upon earth in a life divine. This, along with a practical discipline for its fulfillment, was given to me during my body's sleep by several teachers, some of whom I met afterwards on the physical plane. Later on, as the interior and exterior development proceeded, the spiritual and psychic relation with one of these beings became more and more clear and frequent. And although I knew little of the Indian philosophies and religions at that time, I was led to call him Krishna, and henceforth I was aware that it was with him, whom I knew I should meet on earth one day, that the divine work was to be done. In the year 1910, my husband came alone to Pondicherry, where, under very interesting and peculiar circumstances, he made the acquaintance of Sri Aurobindo. Since then, we both strongly wished to return to India, the country which I had owned in 1914. This joy was granted to us. As soon as I saw Sri Aurobindo, I recognized in him the well-known being whom I used to call Krishna. And this is enough to explain why I am fully convinced that my place and my work are near him in India. Shall I continue? Thank you, Sujata ji. No, maybe somebody else then. Sure. Monica, I'll read. Okay, Sardar ji. The mother spent over 10 months in Pondicherry. She left for France a day after her 37th birthday on 22nd February 1915. From France, she traveled to Japan, where she spent nearly 4 years. Shortly before her final return to Pondicherry, Mother wrote the following message: "I belong to no nation, no civilization, no society, no race, but to the divine. I obey to no master, no ruler, no law, no social convention, but to the divine. To him I have surrendered all, will, life, and self. For him I am ready to give all my blood, drop by drop, if such is his will, with complete joy. And nothing in his service can be sacrificed, for all is perfect delight." Beautiful message. Thanks, Monica. We remember, I think some of us may have read or come across that the first time Mother came to Pondicherry, she says that if Sri Aurobindo would have asked her to stay, she would have stayed. But the surrender was such a great surrender she had to Sri Aurobindo, with Sri Aurobindo, that she did not ask that whether should I stay, should I not. That asking was not there. So just
he did not say it means that the right time for her staying here was not there. So again and again we come across this true surrender between both of them, which is really beautiful. And then mother says, I don't know how it happens, but mother says that when she left in 1915, she left her psychic being in India. So we have no clue how that works, but that's what she shares. Just beautiful to read through these words. Yeah. Yeah, would anyone want to read this much? The part highlighted. Okay, I'll read. Okay, Badal. Uh, uh, in another experience, she addressed the Lord and asked, "Now tell me, what must I do?" Suddenly, everything in me became still. The whole external being was completely immobilized, and I had a vision of the Supreme, all beautiful than that of the Gita. And this vision literally gathered me into its arms. It turned towards the west, towards India, and offered me, and there at the other end, I saw Sri Aurobindo. It was as if this immensity had reduced itself to rather gigantic boy who lifted me up like a whips of straw and offered me. Next day, we began preparing to return to India. It was after this vision, when I returned from Japan, that this meeting with Sri Aurobindo took place, along with the certainty that the mission would be accomplished. Yeah, thank you, Badal. Yeah, someone can read next one. Namaskar, ma'am. I will read. The mother returned to Pondicherry on April 24, 1920, never to leave again. So, the 24th of April is the date of the mother's final return to Pondicherry in 1920. On 24th April, as the boat neared Pondicherry, mother had an experience that she recalled 30 years later. I was on the boat at sea, not expecting anything, when all of a sudden, abruptly, about 2 nautical miles from Pondicherry, the quality, I may even say the physical quality of the atmosphere, of the air, changed so much that I knew we were entering the aura of Sorobindo. It was a physical experience. I had been for a very long time and continuously in spiritual contact, if I may say so, with the atmosphere of Sri Aurobindo. But I had never thought of the possibility of a modification in the physical air, and I was not expecting it in the least. And it was this that gave the whole value to the experience, which came like that quite suddenly, just as when one enters a place with another temperature or another altitude. Thank you.
Okay. Yeah, anyone who wants to read the bit highlighted? Taru, you can maybe go ahead. Mother spoke about meeting Sri Aurobindo on her second and final arrival in Pondicherry, also referring to the first meeting. Only after a series of experiences, a 10-month sojourn in Pondicherry, 5 years of separation, then the return to Pondicherry and the meeting in the same house and in the same way did the end of the vision occur. I was just beside him. We were standing side by side like that, gazing out through the open window, and then together in exactly the same moment we felt now the realization will be accomplished, that the seal was set. The realization would be accomplished. I felt the thing descending massively within me with the same certainty I felt in my vision. And 1920 marked the beginning of full development, not spiritual development that had been going on from the very start, but action, the action with Sri Aurobindo. That was clearly from 1920 on. I had met Sri Aurobindo early, but it really began in 1920. Yeah, so let us go through the last bit if anyone feels ready. Should I? In another reminiscence, she wrote, I came to India to meet Sri Aurobindo. I remained in India to live with Sri Aurobindo. When he left his body, I continued to live here in order to do his work, which is by serving the truth and enlightening humanity to hasten the rule of the divine's love upon earth. The mother once explained the significance of 24th April, the anniversary of my return to Pondicherry, which was the tangible sign of the sure victory over the adverse forces. Let us remember what Sri Aurobindo has said about the mother's victory. The mother's victory is essentially the victory of each sadhak over himself. It can only be then that any external form of work can come to harmonious perfection. The mother was once asked,
How should I prepare myself for the April 24th darshan? She replied, look attentively into yourself to find out what for you is the most important thing, the thing you feel that you couldn't do without. It is an interesting discovery. Yeah, thank you. So let us, before we begin the next half, let us spend a few moments concentrating using what you read just last. How should I prepare myself for the April 24th darshan? So we can take 5 minutes, we'll just concentrate within and look at it, what Mother has said. Look attentively into yourself to find out what for you is the most important thing, the thing you feel that you couldn't do without. It is an interesting discovery. So this is what we take 5 minutes to concentrate upon and ask ourselves. So I'm playing in the background Mother's organ music, music played by the Mother herself.
to walk through life armored against all fear, peril, and disaster. Only two things are needed, two that go always together. The grace of the Divine Mother, and on your side, an inner state made up of faith, sincerity, and surrender. Let your faith be pure, candid, and perfect. An egoistic faith in the mental and vital being, tainted by ambition, pride, vanity, mental arrogance, vital self-will, personal demand, desire for the petty satisfactions of the lower nature, is a low and smoke-obscured flame that cannot burn upwards to heaven. Regard your life as given you only for the divine work and to help in the divine manifestation. Desire nothing but the purity, force, light, wideness, calm, and wonder of the divine consciousness and its insistence to transform and perfect your mind, life, and body. Ask for nothing but the divine, spiritual and supramental truth, its realization on earth and in you and in all who are called and chosen, and the conditions needed for its creation and its victory over all opposing forces. Let your sincerity and surrender be genuine and entire. When you give yourself, give completely, without demand, without condition, without reservation, so that all in you shall belong to the Divine Mother, and nothing be left to the ego or given to any other power. The more complete your faith, sincerity, and surrender, the more will grace and protection be with you. And when the grace and protection of the Divine Mother are with you, what is there that can touch you, or whom need you fear? Yeah, so if there are any sharings, any thoughts, any reflections, anyone you can share, and after that we can celebrate the life of the poet Ramdhari Singh Dinkar by reading a couple of his Hindi poems, very inspirational.
Yeah, so if anyone has anything to share. Namaste, Yes, Monica. Dhawanji, yes, please. In that article that you read, can you? It's I don't know. I recall 21st February is mother's birthday. There it's written 22nd Yeah, or. so it's written one day after her birthday, which was 22nd Feb. Oh, okay, okay. Sorry. Yeah. Yeah, I'm on phone, so I couldn't. I was confused. Yeah, Yes, sorry. yes. All right, so the next half would be, हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में हो. We have to push ourselves, you know, at times we just English continue हो जाती है. So at times, you know, we read Hindi and हिंदी की जो कविताएं हैं बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक भी लगती हैं, इंस्पिरेशनल. एंड रामधारी सिंह दिनकर जी, आई एम श्योर काफ़ी लोग होंगे जो अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक्स में या कहीं ना कहीं हमने दिनकर जी की कविताएं पढ़ी होंगी. तो आज हम कुछ कविताएं हैं. हियर इज डॉक्टर अंजलि. या प्लीज गो अहेड. That time I was in moving vehicle, so I couldn't read. Yes, Ramdhari Singh Dinkar, yes, my favorite one. I had read his poem in Delhi ashram. He had written, I was searching my diary, I had written that poem, copied that from that book also, but I don't remember at present. If you remember. Which one are you talking of? I read there in library in Achha. Sabda. Achha. It was written by Ramdhari Singh Dinkar and Hanji. probably he had translated also. अच्छा, okay. Yes, I'll find it out and then I'll post it in the group. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yes. आप कुछ शेयर करना चाहेंगे रामधारी सिंह दिनकर की लाइफ के बारे में? उनकी लाइफ के बारे में बहुत, उनका तो जितना भी नाम है, रश्मि रथी, जो उन्होंने लिखा, जो इस तरीके से, और वो जो उर्वशी की जो कहानी है पूरी, वो तो रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही फेमस है. एट प्रेजेंट आई डोंट रिमेम्बर दैट, सो आई वोंट बी एबल टू स्पीक ऑन दैट. यस, ठीक है. तो जो चीज अब हमें ना हिंदी आती है, ना हमें कवियों और कविताओं के बारे में ज्यादा कुछ पता है, लेकिन मजा बहुत आता है. यू नो, इट गिव्स अस डिलाइट व्हेनेवर वी गो थ्रू सच इंस्पिरेशनल ब्यूटीफुल. वीर रस की कविताएं काफी हैं, मोटिवेशनल कविताएं हैं. तो मैंने कुछ सिलेक्ट करी हैं पोएम्स जो बार बार उसकी लाइंस वी रिमेम्बर. स्पेशली वन ऑफ देम इज कृष्ण की चेतावनी, और रश्मि रथी, आई थिंक रश्मि रथी में ही है वो. हाँ, उसी का वो पार्ट है, कृष्ण की चेतावनी. तो मैंने वो कॉपी करके रखी है. आई थिंक इट वुड बी नाइस इफ गुड या वी कैन गो थ्रू इट. आई थिंक इट डज. हिज बर्थडे इज इन सितंबर, आई रिमेम्बर. हाँ, बर्थडे हो सकता है. आज तो डेथ एनिवर्सरी है. हाँ, बर्थडे इज इन 24 सितंबर. अच्छा, यस. So I hope this is clear enough. I don't know how to make it even bigger. Let's see. Okay, can't. So this is the maximum I can go. And this is about जो महाभारत में स्टोरी चल रही है उसके बारे में है. It's so inspirational. Read, like if someone can read it with a flow, it would be really so beautiful. Yeah, so, yeah, please go ahead. वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर. वाह. सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है. मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए. दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम. हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे. दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका. उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला. जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है. हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया.
डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात यमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड भर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण ने शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खरे प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। वाह, thank you Monica, after a long time. Actually this whole description is what Krishna had shown Arjun in कुरुक्षेत्र। जो विकराल जो विश्व रूप दर्शन एक्चुअली उन्होंने दिया था अर्जुन को, यहाँ पर वो दुर्योधन को जो बता रहे हैं। कैन यू ऊपर वाली लाइन में जहां से और ऊपर और ऊपर और और हाँ यहाँ से है। ये देख गगन मुझ में लय है, देयर इज ए स्काई एयर झंकार विद सकल, ये सब मुझ में है। मुझ में लय से है संसार सकल, सारा संसार मुझ में है। अमृत्य फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल जिधर से सूरज निकलता है वो भी मेरा है। पूरा भूमंडल मेरा, माय चेस्ट है, बहुत इतना विशाल है। भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। मैनाक पर्वत पर जितने हैं वो सारे मेरे पैर हैं। जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सब मेरे मुंह के अंदर हैं। दृग हो तो दृश्य कांड देख, आंखी हो अगर तेरे तो देख सकते तू। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, जो मरने वाला है, जो क्षर है, अक्षर है, जो अक्षुण है, वो सब मुझ में है। शतकोटि 100 सूर्य हैं, 100 चंद्र हैं,
100 नहीं, सहस्त्र है, शतकोटि तो हुए, सहस्त्र हुए, 1000 हुए, नदियां Yeah, हैं, 1,000 crore. Yeah. 1000 करोड़, यस यस यस, 1000 करोड़, सर हैं, समुद्र हैं, सिंधु हैं, और शतकोटि, 1000 विष्णु ब्रह्मा महेश, ये सब मुझ में है, जलपति धनेश रुद्र, शतकोटि काल दंडधर लोकपाल, ये सब मुझ में है, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। अगर तुम बांध सकते हो तो बांधो, देखो तुम्हारी कितनी बड़ी जंजीर है। भूलोक अतल पाताल देख, सारे तीनों लोक मुझ में हैं। गत और अनागत काल देख, जो बीत चुका, जो है अनागत है, वो सारा समय मुझ में है। सारी सृष्टि का सृजन जहां से हुआ वो मुझ में है। महाभारत का रण है, और वो पहले ही से दिखा दिया महाभारत के रण में कि मृतकों से धरती जो है पटी हुई है, पहचान इसमें कहाँ तू है, देख ले तू कहाँ है यहाँ पे। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरे पैरों के नीचे पाताल है, मेरी मुट्ठी में तीनों काल है, मेरा स्वरूप विकराल देख, बहुत भयंकर स्वरूप है मेरा, वो जो मुझे वही वाला स्वरूप सामने याद आ रहा, विश्व रूप दर्शन, जिसको देखकर एकदम डर जाता है, रोए रोए में वो दिखता है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लोग मुझी से जन्म पाते हैं और लौटकर मुझ में ही आ जाते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, जीभ से जो लपलपाती अग्नि निकल रही है वो भी मेरी है। और सांसों में पाता जन्म पवन, मेरी जो सांसें हैं वो ही हवा है। जिधर मेरी दृष्टि चली जाती है उधर सृष्टि हंसने लगती है, और जब मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ तो चारों तरफ मृत्यु हो जाती है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। एक्चुअली जो दिस स्पेस इज कॉल्ड, लाइक दिस इज द स्पेस which is vast, so our mind is like that, which we can go over there. हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, मैंने बहुत तुझे समझाने की कोशिश की, अपनी दोस्ती की दुहाई दी, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की या मरण होगा। ब्यूटीफुल, थैंक यू। आई होप आई एम नॉट, Thank you so much. Yeah, much appreciated. Thank you. थैंक यू। Thank you. You know, a couple of lines here which are very practically relevant for us is जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर पहले जाता विवेक मर जाता है। So I remind myself. Yeah. सबसे ऊपर अगर आप ले लीजिए और हाँ ऊपर जी, चले जाइए, हाँ वहां जी। पर है और ऊपर, हाँ, और पूरा ये रहा। बिल्कुल जहां से शुरू है, और सबसे ऊपर पहली लाइन, वर्षों तक वन में घूम घूम, जंगल जंगल फिरे, बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे विघ्न आए, लेकिन उन सबको प्यार से उन्होंने किया, धूप सही, पानी पत्थर सब सहा, और ये सब सहने से पांडव जो है वो निखर आए। लाइक जेम्स जो होते हैं, जैसे आपस में जब रगड़ते हैं तो उनमें शाइन आती है, तो हम लोग भी के जितनी भी बाधाएं और वो आती हैं, और उनको जब हम हैंडल करते हैं तो वी आर नॉट द सेम पर्सन, हम और थोड़ा निखर, तो फॉर शाइनिंग, लाइक इन सावित्री में भी कुछ लाइनें हैं, जो चिजलिंग जो होती है, जहाँ पर जब हथौड़ा थोड़ा छेनी चलती है तो उसमें से रूप निकलता है एक्चुअली। तो जो डिफिकल्टीज हम लोगों की लाइफ में आती हैं, जो धूप होती है, जो बाधाएं होती हैं, वो एक्चुअली they are good for us, for our evolution of soul, right? Yes, now you can continue. Yeah, so if anyone wants to share anything more, so this was the line which comes again and again for me. Yeah, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। So like in Mother we read, you know, how the force of impulse and you know the vital nature, उसके सामने रीजन का कुछ नहीं टिक पाता, रीजन उसकी साइड लेने लग जाता है। तो जब नाश मनुष्य पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो वो उसी की जस्टिफिकेशन, यू नो, व्हाई माय डिजायर शुड बी ग्रांटेड, डिमांड शुड बी फुलफिल्ड। इनफैक्ट एंगर में सबसे ज्यादा ये होता है, जहां पर कि वी जस्टिफाई आवर एंगर, अपनी सारी डिजायर्स को तो हम एंगर करते हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है वो एंगर को जब हम जस्टिफाई करते हैं। And Sri Aurobindo has written in this that first condition is, if you want to manage your anger, is that first stop justifying your anger. Stop justifying your anger. And Mother also shares to someone in a letter, I don't know maybe who the person is who the mother is sharing this with, that anger is not worthy of you.
Okay, good. So that is what mother writes to that sadhak who writes about getting angry. Mother says that इसको निकाल फेंक बाहर करो because it is not it you don't deserve this in your life. So that's how mothers love, that we are not worthy of these poisons that we keep carrying all the time. Right. Yeah. Okay, so there are few more poems which are very interesting. I could find, again, I have no knowledge, but just like, so this I realized that this is there in the textbook of one of my children. Fourth, third, fourth में ये book में आई हुई है, पड़क्कू की सूझ. So maybe one of us can read this. It's like a little funny but reflective poem. Yeah, if anyone बता दीजिए पहले पढ़क्कू किसको कहते हैं. हाँ, पड़क्कू आप बता दो, आप बताओ. You are the one ना, you are a ferocious reader. पढ़क्कू जो बहुत पढ़ता है. पता नहीं मतलब अभी इसमें किस सेंस में यूज किया है, I don't know. Maybe we'll go through and yeah. Yeah. If anyone wants to experiment with reading Hindi, you can go ahead. I think Gaurav said he wants to read. Okay, yes, Gaurav, if you still want to read, please go ahead. Hi Monica, hi everyone. Hi. Yeah, मैं actually पहले कृष्ण के चेतावनी ही पढ़ना चाह रहा था, but I'll read this one now. Yeah, no problem. चलो कृष्ण नहीं मिले तो पड़क्कू मिल गए, एक ही बात है. Yeah, so this is पड़क्कू की सूझ. एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे. जहां न कोई बात, वहां भी नई बात गढ़ते थे. एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ न पाए. बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए. कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है. सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है. आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसे. कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है. Can you zoom in a little bit, please? Actually, I'm unable to zoom in, so you'd have to, I don't know, make terms with, maybe I can make it title. Yeah, just a second. This is in notes, so I'm not able to do much with it. Yeah, this much. You can do command plus and it will Yeah, zoom that's not automatically. working. Yeah, that's not working for me here with notes somehow. लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया है. हाँ हुआ है पहले से. Gaurav, go ahead. So actually, in my thing, it's got pixelated. I can't read anything now. If अच्छा. somebody is clear with this, तो कोई और पढ़ ले, please. अच्छा अच्छा, yeah, please go ahead, anyone. If no one is reading, I can read. Okay, Sujata ji. आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद ये कैसे. कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या उड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है. मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है. जब तक यह बजती रहती है, मैं न फिक्र करता हूँ. हाँ, जब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ. कहाँ पकड़ू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे. बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़ी. अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए. घंटी टन टन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे. मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पकड़ू जाओ. सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, वहीं ऐसे फैलाओ.
यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। Yeah, thank you. मंतिक क्या है? I think manthik is metric. मैट्रिक? 11वीं ज्ञानी या ज्ञानी। ज्ञानी? हाँ हाँ, आई थिंक कुछ मेट्रिक जैसा। मैं जब इनको पढ़ा रही थी ना बच्चों को, तो दैट्स व्हाट आई। इसलिए मैंने कहा ये आपको पता होगा मंतिक का मतलब क्या है। बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़ी, अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए। So I think, yeah, so they have also in this class 3 textbook they have taken up this poem, और खूब सारे इसमें क्वेश्चंस भी हैं अगर हम करना चाहें। Those of us who are interested. Yeah. So I think we have जो towards the end वो ये कह रहे थे। दिनकर इज फेमस फॉर देश प्रेम की कविताओं के लिए। हाँ, उनकी हाँ। बहुत फेमस है जो हम लोग में थे, मेरे नगपत मेरे विशाल। हिमालय के ऊपर उनकी लिखी हुई कविता, बहुत सुंदर कविता है वो। हाँ जी, हाँ जी, काफी हैं वैसी। हाँ, बिल्कुल बहुत सुंदर है। yes, yes. So this was just funny, so I took it on. But it was very interesting. Ramdhari Singh Dinkar was interested, and he has read was in Sri Aurobindo's philosophy. Yes, yes. I think some of the poems and so poems or songs, I don't know what, I have seen that they are translated, some of them, by Dinkar. That is what I am saying. Yeah, in Hindi. दिल्ली आश्रम में मैंने पढ़ा था वो। हाँ जी, हाँ मैं जी। ढूंढूंगी, वो बुक वहां पर थी सबदा में। Yes, yes, yes. They are also available online. There is a link I can share with all of us who are interested. Many other poets also, Hindi कवि, उन्होंने भी translation किया है श्री अरबिंदो की poems का हिंदी। तो एक ये लास्ट हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मे बी वी कैन एंड। एंड दिस वाज जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन, नथिंग, नो हिडन मोटिव हियर। सो ये एक वीर रस की एक कविता है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो अच्छा रहेगा। छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी नहीं है। वीर, द पोएम इज कॉल्ड वीर। हाँ जी, would anyone want to read? I can make it a little bigger. Yeah, I'll go. वीर। सलिल कण हूं या पारावार हूं मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। हम थोक ठेलता है जब नर, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो,
व्रतिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। तो हमें बत्ती जलानी है, हमको कंप्लेन नहीं करनी कंप्लेन नहीं करनी कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। बत्ती जलानी है, सबको बत्ती जलानी है अपनी। Yeah. So this was just an exploration. From time to time we can do, and also it's also a request and a nudge to those of us who may enjoy poetry or Hindi poems, and maybe because of the mundane whatever routines of life and adulthood we have lost that time which we used to spend. So अच्छा है कि उसको थोड़ा सा समय दिया जाए to have joy and delight, and not only joy and delight but also inspiration. So much inspiration these poems have. Those times were different, and there were so many Gopal Das Neeraj, many Kavi, Subhadra Kumari Chauhan, right. beautiful poets, poetesses. स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज को थे। बिल्कुल एक एक लाइन इसकी है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से ना कभी उफ कहते हैं। So this is also, day to day life में this can give so much of inspiration if we maintain a touch, a contact with whatever brings delight and inspiration. Okay, any last comments, anyone? There's another poem again which I remember many a times. It's not by Dinkar, गोपाल दास नीरज जी की पोएम है, जिसमें वो है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गवाने वालों, कुछ सपनों के बह जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और ये मैं तो भूलने बहुत लगी हूँ असल में। पीर बहुत गहरी है, पीर बहुत गहरी, द पेन इज नाउ मोर, कुछ करना होगा। Actually it is in the context of the social situation. Social, it's very beautiful ghazal है actually. Yeah, we can take that up sometime. हाँ, मैं देखती हूँ उसको। हाँ बिल्कुल, अगर आपको मिले तो आप भेजिएगा। एक और भी थी ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। Are you talking about that? I'm talking about that. हो गई है पीर पर्वत सी. The pain has become so much like a giant mountain. हो गई है पीर पर्वत सी अभी, पिघलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। राइट। Taru, you remember this one? Yeah. You want to just maybe recite it if you remember? Actually, Gopal Das Neeraj has a peculiar style of narrating the poems also. बहुत ही करके वो करते थे काफी, और लेकिन बहुत बढ़िया उनके होते थे। इनफैक्ट बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग जो हैं, जैसे मैंने अपनी कॉलर ट्यून में लगा रखा है ज्योति कलश छलके, लता मंगेशकर का है ज्योति कलश छलके। इट्स कि जब सवेरा होता है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे घड़े भर के जो रोशनी है वो निकल आई है पूरी, और इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय लता मंगेशकर। तो वो जो पहले गीतकार होते थे, वो भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिलॉसफी वाली कविता गाने लिखे हैं जो गीता और उसकी फिलॉसफी रही है, जो कहाँ से उनके निकले हैं, हर एक के साइकिक बीइंग कहीं टच होता है और वहां पर उस समय उस मोमेंट पर वो निकलता है। Right. And happy, thank you Monica, you revived this. हम लोग सालों से अब हिंदी भी छोड़ दिया, इंग्लिश भी छोड़ दिया, श्री अरविंद फिलॉसफी पर उसमें भी लगता है कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, रोज पढ़ना कुछ ना कुछ पढ़ने है। लेकिन ये भी साइड बाय साइड ये सारी चीजें हैं जो सबको अपने अपने लेवल पर अनुभव होते रहते हैं, बस वो उसको योग का नाम नहीं देते हैं।
इनफेक्ट कवियों में महादेवी वर्मा वगैरह को लोग बहुत करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं। वो मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतिहास यही कल थी अजमेर, आज के संदर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा I लगता think है। Mahadevi Verma has written many good poems on animals. हाँ, एनिमल्स पे तो उनकी पूरी कहानी ही है कि वो एक गिलहरी थी, गिल्लू के ऊपर उन्होंने हाँ, पूरी स्टोरी लिखी। एक्चुअली बछड़े के ऊपर, बकरी वो के फैक्ट ऊपर। है। हाँ, महादेवी वर्मा का घर मेरे घर के पास ही वहां पर है, इलाहाबाद की है ना वो। अच्छा तो अच्छा। उनकी खिड़की से एक गिलहरी तभी थी। आपको वो घर की मुर्गी दाल बराबर कर दिया आपने। नहीं, सारे लोग इलाहाबाद तो गढ़ रहा है। पंत जो है सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर पास में रहते थे, कुटिया में वो लिखते थे। और यहाँ पर रेडियो स्टेशन में वो लोग सब लोग आते थे, धर्मवीर भारती, इन लोगों का पूरा गढ़ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि वो बहुत अच्छा लिखती, छायावाद की कवित्री हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी, उनकी कविताओं पे ड्राइंग बहुत अच्छी थी। वही कनेक्ट होने वाली बात है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर और ये ज्यादा पसंद आता, मतलब क्योंकि ये ओज भरते हैं आपके अंदर। इनकी रश्मि रथी भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत। और उर्वशी तो बहुत उसमें प्रेम और प्रणय का है। जैसे उर्वशी जब उसको छोड़ के चली जाती है तो उसमें जो उन्होंने लिखा है, ग्रेट फिलॉसफी ओवर देयर। मैं इस समय मुझे याद नहीं है लाइनें, जैसे लोग बोल देते हैं तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उर्वशी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे सिर्फ महादेवी वर्मा की ये वाली जो है परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विमेन एम्पावरमेंट के समय में कहाँ उमड़ी और मिट चलने की बात है। या नारी तेरी यही कहानी आंचल में है दूध आंखों में है पानी। अब कौन यंग जनरेशन आज इससे कनेक्ट तो करेगा? आप वो वाली साइड पे रख दो पोएम, इतना परेशान होने की क्या बात है, आप अच्छी वाली उठा लो। मुझे जो और भी लिखी हुई है। हम लोग एक एक सेशन एक एक इसके ऊपर कर हाँ सकते हाँ कर सकते हैं, या लाइक यू नो दिस अगेन अ ब्यूटीफुल वन, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं हाँ भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। हाँ, हम बहुत सुंदर है। हाँ Yeah, so many good ones are there. Yeah, we can rejoice in. Yeah, Taru, are you going ahead with that one? I think we can take it on a different thing. It's a Different long thing. one, but I Okay. did want to say one thing. You know, ये जो अभी रश्मि रथी का पढ़ा ना हाँ आपने, जी। जो हमने पढ़ा था, हाँ मैं वो जो एक लाइन थी कि जब उसने दिखाया कि देख सब मरे पड़े हैं और देख तू कहाँ पे पड़ा है, देख ले। हाँ तो मैंने वो पहले देखा नहीं था, मतलब वो लास्ट लाइन ना, तो आई थॉट कि अरे उसको ये भी दिखा दिया कि देखो वो मरा हुआ है और फिर भी उसका यू नो ही उसने सरेंडर नहीं करा, उसने, बड़ी अजीब बात है। फिर मुझे उसके बाद एकदम से लगा कि हम सबका यही हाल है, राइट? मुझे पता है कि मैं भी बात करते हैं 2 मिनट इसी, का। यू नो, दिस इज माय एंड, यहीं पे मुझे भी पहुंचना है। और फिर मेरा जीवन क्या बदला है ना, पर दूसरों को देखने में जैसे मुझे लगा कि अरे उसने फिर भी कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर दी, उसको समझ नहीं आई। तो क्या मुझे समझ आ रही है कि मेरा भी अभी यही अंत है और मेरा जीवन क्या उससे बदल रहा है? मतलब हाउ इट्स सो डिफरेंट जब दूसरे पे देखते हैं और जब खुद को देखते हैं कि तूने सीखा, तूने समझा। तो मतलब वेरी हमको गुड। हमको ये दिख जाता है कि दुर्योधन इतना अंधा कैसे हो सकता है, हाँ, उसको क्यों नहीं दिखा, लेकिन एग्जैक्टली। अपना अंधापन हाँ हमें नहीं दिखता है ना। हाँ, ये एग्जैक्टली। So on this note, let's close with a few lines from Savitri, in alignment with what you were sharing just right now. Just yeah. Monica. So there Yes, was this, Nandini. Yes. yeah, there was this very beautiful line, right? Man accepts fate, but can refuse to, right? Or accepts his fate, or can refuse his fate. You had put it up. Could you just expand on that a bit? And I think remember the lines a bit more. I So can pull it when up. he's Yeah, when he says, what I understand is when you can refuse to, as in, is it more the inner demons that one can refuse? Is that so? I have no clue actually. Which one are you talking of? This is just one small line. I think it's on just 1 minute. I'll tell you. It was put up on, I think, Savitri's your Savitri page, as in the WhatsApp group. Mm-hmm. Oh,
now that I have to find the line. Just Yeah, I don't know if you're talking about this one here. that very just two set, not even two, like two lines. No, he says. So here they talk about fate, that how we take it on ourselves without even questioning it, and it becomes our life. So here, if you can see. Is that the same one? I I don't can't know see which because one is. my yeah, it says here. I found it. Man can accept his fate, and then comma, he can refuse. Yes. I'll just put it up on the on the message board. Just a minute. Accept his fate. This one. I've just put it up. Oh, you have put it in the chat? Yeah, in the chat Okay. box. Man can accept his fate, he can refuse. Those who want to leave can leave. Nobody is tying you up. Those who want to stay can stay, please. Yeah, here we go. The Book of Fate. We can go through these lines. I don't remember really what is there. But we can go through. The force of man can be driven by God's force. Then is he a miracle doing miracles. For only so can he be nature's king. It is decreed, and Satyavan must die. The hour is fixed, chosen the fatal stroke. What else shall be written is written in her soul. But till the hour reveals the fateful script, the writing waits illegible and mute. Fate is truth working out in ignorance. O King, thy fate is a transaction done at every hour between nature and thy soul, with God for its foreseeing arbiter. Fate is a balance drawn in destiny's book. Man can accept his fate, he can refuse. Even if the one maintains the unseen decree, he writes thy refusal in thy credit page. For doom is not a close, a mystic seal. I think the lines that we read earlier also, this I believe that this is Narad talking to King Ashwapati, if I'm not wrong. Here, when the discussion is happening on Savitri's fate. Okay. Yeah, so I think the clue for all of us here is what seems to me is that here, in these first three lines, the force of man can be driven by God's force. Then is he a miracle doing miracles, for only so can he be nature's king. And that is how we can refuse. So when we talk about we have a choice every moment, we have a choice. People may talk about whether free will is there or not there. We can have long discussions on it, but in each moment of our practical day-to-day life, we have a choice whether to follow the limited self, the ego consciousness, all our stories, little thoughts, feelings that cloud our true sight, or whether to deeply connect with that inner knowing and follow its decree, follow that will. This is a choice which is very practical choice. तो हम ये ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहते हैं तो अलग बात है, जहाँ पे हम अपने आप को डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए मुझे, ये रीजन है, वो रीजन है, जो हम रीजन की बात कर रहे थे. एंड राइट नाउ व्हाट आई वाज अबाउट टू शेयर विद ऑल ऑफ अस इज how Sri Aurobindo shares that all these thoughts, feelings, they have to be pushed aside. हम क्या करते हैं, we wait for them to resolve.
You know, we go goal in the कीचड़ again and again कि कभी resolve होगा. And he is saying कि वहां वो नहीं करना है जो आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उसको साइड पे करना है, उसको क्रश करना है, उसको पुश करना है. So these were the lines I wanted to bring forward, and then we can end. Just a second. लेकिन हमें ये बर्दाश्त नहीं होता, because when I am in the middle of desiring and longing, तब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे कोई ये कह रहा है कि हाय मैं इसको क्रश कर दूं, क्या बचेगा मेरा, because I am so attached to that, you know, living as the vital being. Just a second. Yeah, this one. A power that lives upon the heights must act, bring into life's closed room the immortal's air, and fill the finite with the infinite. All that denies must be torn out and slain. देखो हमको क्रूअल होने के लिए कहा जा रहा है इस चीज के लिए, तो भैया निकाल बाहर फेंको वो पॉइजन जो भर भर के हम चेरिश करके रखते हैं. All that denies must be torn out and slain. चाहे कितनी भी दर्द हो उसको बर्दाश्त करनी चाहिए हमें वो. And crushed the many longings for whose sake we lose the one for whom our lives were made. उन longings के पीछे भागते भागते हम उससे चूक जाते हैं जिसके लिए हमारी जीवन हमारा ये बना हुआ है, जिसके लिए जिंदगी बनी हुई है. What a betrayal. That's the highest betrayal that we can do. So this is page 315, 316, the book of the Divine Mother. And again, sorry? Yes. No, which you put up this Yes, this today. afternoon. Yes. Today, right? Yes. And bilkul exactly related to this, I was, I shared yesterday, I think. Obedient, she sat. Yes, that was beautiful. Yeah. Yes. Yeah, this one. Beautiful again. Very powerful and tells us what to do. Obedient to a high command, she sat. Time, life and death were passing incidents. हमारे लिए ये पासिंग नहीं होते हैं, हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं. एक छोटी छोटी हैपनिंग को इतनी ज्यादा तवज्जो देते हैं हम. तो वो कह रहे हैं कि टाइम, लाइफ, डेथ वो हो रही है, अगल बगल में सब कुछ हो रहा है. शी इज नॉट पेइंग विटनेस टू दैट. Obedient to a high command, she said, time, life and death were passing incidents, obstructing with their transient view her sight. So this is what they do. वो छोटी छोटी चीजें जो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, वो क्या करते हैं? They obstruct with their transient view our true sight. Her sight that must break through and liberate the God imprisoned in the visionless mortal man. The inferior nature born into ignorance still took too large a place. इतनी जगह लेता है, छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में इतनी जगह लेती हैं कि जो जरूरी है उसको देखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है. उसको बोलते हैं भाई पहले इससे निपट लें फिर जरूरी वाले को देखेंगे. All the time we have all the excuses. The inferior nature born into ignorance still took too large a place. It veiled herself and must be pushed aside to find her soul. अब वो ये नहीं कह रहे कि उसके inferior nature के बैठ के अंदर तुम एक एक धागे को तिनके को निकालो. He could have said that if that was the process, but he didn't say, and he repeats this time and again. It must be pushed aside. जैसे again, the example comes of a football playing or rugby playing. आप rugby वाली बॉल लेके जा रहे हो, आप आ रहे हैं लेफ्ट राइट से, सारे लोग आ रहे हैं आपसे लेने के लिए, आप उसको साइड आपको पता है आपने क्या करना है. So that is how much priority we have to give. We have to reject those thoughts. We have to continuously reject. Yes, ये तो अपना परंपरा बनाए, मतलब हमारी ये हैबिट बन जाएगी हमारी. Like Sri Aurobindo in his this famous experience where Lele had instructed him. He says that he said that consider as if the thoughts are coming from outside, feelings are coming from outside, and the moment they enter, you just reject, keep rejecting, so that nothing remains. It's silence. Then the mind can become a receptacle for the higher knowledge, higher sight. ये तो हमें करना ही है, मतलब अब सूनर लेटर वो अलग बात है, सब कौन कन्विंस्ड होते हैं. अभी नहीं हो रहे कुछ लोग कन्विंस, तो ठीक है, बट जो कन्विंस हैं आई थिंक उनको तो
कर देना चाहिए शुरू अब प्रोग्राम, क्योंकि लंबा प्रोग्राम है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है पाथ पे। होते होते किसी एक दिन को ये एक चीज समझ में आती है, जो मैंने अभी रिसेंटली, ये रिजेक्ट करना अभी एक थॉट है जो कंटिन्यूअसली ऑफर करने के बाद भी नहीं जा रहा। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि जैसे ही वो थॉट आने लगा वैसे रिजेक्ट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मतलब बाहर जाओ बाहर जाओ, एंटर ही नहीं होने देना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ऑटोमेटिकली ये अपने आप आया कि ये ऐसे नहीं होगा, ये ऑफर करने से नहीं हो रहा है कि रोज हम ऑफर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, नहीं जा रहा है। अजीब सा स्टैग्नेंट थॉट है। और वो जो लगता है जैसे एक जिद्दी बच्चा नहीं होता है, बार बार आप आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो उसको रिजेक्ट, रिजेक्ट, स्टॉप, नो, नो एंट्री, नो एंट्री। And I was little bit successful in that. And Sri Aurobindo says that, why do they keep coming again and again? And they will keep coming, but we don't have to cherish them. They have to stop holding any promises for us now. Only then the rejection, or the visual we can also use again in rejection is, I think Dr. Basu had once shared that imagine that you have a big room up here. And you have to keep that room empty. So if outsiders come, intruders come, which are thoughts and feelings, Kabir ji also says that these are intruders, they eat up your crops. So when they are coming, you keep on rejecting and keep the mind empty. And when the mind is empty and silent, then only it can, it become patra, patrata ki baat karte, so that the higher knowledge can come. What he was sharing, so that the infinite can come in the finite. Right. Yes, so we will do that, all of us. Anyone? Sharda ji, you wanted to share something? Monica, I wanted to share, see, we always cherish this suffering fully, cherish this thought fully, maybe half an hour or so, if the bad thoughts are coming or extra thoughts are coming. So at least in my case, I'm saying, so I want to reject, but I know that I should reject. But after, continuous thoughts, maybe after 10 minutes, why I am continuing to think like this? So after that only it is happening that I should not have, encouraged that thought. So as you rightly said, we have ample of time in front of us. If we keep on doing, Sri Aurobindo has mastered this within 3 days. At least for us, 30 janmas, we don't know how many janmas we are going to, come again and again. But at least, after 10 minutes, before it was half a day, now it is reduced to 10 minutes or 1 hour. But, the one thing I realized that, I have a beautiful taste for that suffering, So I would love to continue that thought. So after some point, it will hit me very badly. Then I'll think, oh mother, what is this I'm doing? So that was very interesting play to, look at myself. Yeah. And this taste that we get while we are enjoying indulgence in those which are not really very beneficial, it's as if I feel that as if I'm eating myself up. वो होते हैं ना कुछ, जैसे dog, dog when it's chewing its bone, है ना, वो एक्चुअली में वो अपना खुद का खून चूस रहा होता है, उस पे उसको मजा आ रहा होता है. He doesn't realize that. I don't know whether he realize or not. So हम अपने आप को खा रहे होते हैं when we are, indulging in these things which are actually so poisonous. But I think it takes time because lower nature has a strong hold. And it, as you said, in now it used to happen in hours. Now in 10 minutes I wake up and say, oh, where I am going, and then maybe it becomes 5 minutes, 2 minutes, and then slowly it loses its grip. So early morning nowadays, I've meditative practice. Today, at least for half a day, I will think only positive. I will not encourage any negative thoughts. Every day I will think, but negative thoughts do come. It is coming, but at least I'm happy that I'm able to find out, I'm going into that, that wave. Yeah.
And I think the manual work, I'm again and again stressing that we nowadays, our lifestyles are too mental, too intellectual. And that is one of the reasons that we find so much of time going in loops round and round in our things, back and forth, back and forth. So giving ourselves wherever we can put ourselves, any kind of physical, mental, not only mental, but physical work, if we can. But mind has Give its ourselves. own capacity. If you do, your body is doing the work and mind is thinking about all हाँ this. बिल्कुल होता है, but if there is an aspiration that I want to have silence in the being, then manual work really helps, really helps. So even like not only like gardening and all these Yeah. things, they're हाँ very हाँ good. yes yes, गार्डनिंग हो गया, आप कहीं पे पत्थर उठा लो यार, कहीं पे मतलब ऐसा क्या हो गया मतलब कहीं ऑप्शन मिल रही है तो पत्थर उठा लो, मतलब कुछ हैवी वर्क, बिकॉज देन all my energy, see, the more risky work I give myself, the more my energies will be channelized. We don't give ourselves enough risk. We want to be too secure all the time. और उसकी वजह से ये energies up down करती रहती है, बेचारी वेली बैठी है. Like when we call a child naughty, why do we call a child naughty? Because his energies, there is no place enough challenging that he is fine where he can put his energies. When he gets such a challenge, like a risk, बच्चों को हम risk लेने ही नहीं देते. अच्छा बेटा यहाँ मत चल, गिर जाएगा. So जब रिस्क लेता है बच्चा तो इन गैदरिंग होती है कॉन्शियसनेस की. लाइक अगर मुझे अभी रोप पे चलना हो या कोई ऐसी एक लेफ्ट साइड पे चलना हो जहाँ पे गिरने का डर है, माय होल एनर्जी विल बी कॉन्सेंट्रेटेड देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट फुली. बट वी डोंट गिव अवरसेल्व्स दोस चांसेस. वी मेक अवर लाइफ्स टू इजी. So as if this is a punishment for making my life too easy, that the mind goes round. कि लो भाई मजे चख लो अब तुम. Like that. Yesterday, I experienced this, since today is Darshan Day, we wanted to, offer some flowers to the mother. So we were searching for the flowers. For the main flowers I got, but for the outline, we always buy this chrysanthemum type so that you will arrange it neatly. Yesterday I was searching for it. I was searching for that mala type. It was not available, and my husband was saying, it's okay, you'll get it somewhere. Here you'll get, there you'll get. Finally, I didn't get the flowers. So the time was already 7 o'clock yesterday. So see, if you have to put one by one flowers, then it will take a lot of time. As you rightly said, when I was, arranging the flowers, I was seeing myself. Where are you now? Where are you now? At this moment, you are arranging the flowers. You want to offer these flowers to the mother, but your mind is somewhere else. I could, find out that, but I'm thinking that I'm going out, but again, I'm coming back. Again, within the next flower, and my mind is going out. So after finishing everything, by the time, it was 11:30, I did pranam to the mother. And then I said, Mother, I have kept flowers, but still not to my full concentration, devoted to you. So this hand has done some work, but mind also should be there, no? So you rightly said, you are not giving that, what is that? You're not working really hard to make that thing all right. Like, I think hard भी नहीं use कर सकते यहाँ पे. It's like basic simplicity in the mind, which we lack. Yeah, which little children have. They have simplicity, they have innocence. जहाँ है वहीं पे हैं. अगर सैंड में बैठे तो सैंड में बैठे. हम सैंड में बैठे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग में किचन होती है. होती है. मतलब what can we do? And that is what we have to correct. Like very simple. अच्छा कप टूटा तो कप टूटा, सिंपल. ये नहीं कि किसने तोड़ा, वहां क्यों रखा. That's where we go. किसने दिया था, 2 साल पहले का था, इतना एंटीक था. So just basically being very simple, uncomplicated, unentangled. And we can do that. Yeah, all of us can. We must. Long way to go. Yeah. नहीं ऐसा मतलब I don't think, मतलब इसको भूल जाओ आप. Long way to go भी मेरे धारणा हो गई ना, मतलब मेरे दिमाग का. उसको भी भूल जाओ आप. बस अभी का हम देख लेते हैं. अच्छा अभी कर सकते हैं.
है ना? अच्छा अभी कर सकते हैं, अच्छा इस मोमेंट, अच्छा इस मोमेंट में, अच्छा इस मोमेंट में, so moment by moment if I see, then even the long way won't bother me or come to me. That is a beautiful thought, Monica. Yeah. I Or long, always think that way. yeah. So again, I made a mistake. Again, I made a mistake. Yeah. Good. Okay, so let's maybe do a dedication for 1 minute, sharing all our accumulated merit of collective reflection, discussion, reading, clarity. May all of us, all the sentient beings near to far, may our hearts be full, content, minds simple, uncomplicated. May we have lots of joy and progress in our life. Thank you everyone and happy Darshan Day. Thank you so much for this beautiful Hindi poems. Thank you everyone. Thank you Anjali ji also for sharing. Anjali ji, you read it so beautifully. Thank you so much. Monica, let's have more sessions like this in Hindi. Yeah, we will have one in a few weeks, like a little unorganized, I would say, not very Good organized. celebration of Darshan Day today. Those who are not in Pondicherry, they have this taste of Darshan Day. Beautiful. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you everyone. Bye-bye. Thank you, Monica. Bye-bye. Thank you. Thank you all. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye.